Okay, okay. Welcome everyone. This is the management optional strategy session. So I'm mainly focusing it for civil services in 2023 students and the aspirant who will appear in future civil service examination 2024. If you are following our lecture series, I have recently discussed 3 lectures, right? One on 2 on decision making 1, decision making 2, right? And the third one was on the probability. What I plan to do today, this is not a classroom. This is kind of a strategy session. This session is mainly catering to aspirant who will be opting management optional, who has opted management optional, and I will tell them what kind of optional it is, what you should what things you should keep in mind while taking this optional. So, few important points. Let me say management, right? Management optional. If you see the syllabus, okay, let's say you see paper 1, right? Paper 1 and paper 2. I'm calling it paper 1 and paper 2. You know, in paper 1 there are again 6 modules, right? So 6 modules. This is OB, MFP and HRM, right? So this is paper 1 section A, organization behavior, management function process and human resource management. This is mainly theoretical nature, okay? And section B is, sorry, just a minute. How to minimize it? I don't know. Okay, now I think it is fine now. Okay, so this is, now here in section B you will see marketing, right, and fin and account. Now, it very important question is what kind of books you have to read. What kind of question they ask. See, the simple answer is it's a UPSC question paper. Let's say you compare it with another optional history, history, mathematics. The conceptual, the difficulty level is almost same in all optional subjects. So do not expect a very simple question paper or a very difficult question. It is same as what is happening in other optional subjects. Yes, but there is one thing. It is not UPSC is not going to nitty-gritty. Let's say in some optional subject you find very UPSC goes into details. That kind of thing is not happening in management. Questions are very simple. If you have done, if you worked hard in during your MBA, BBA or engineering, you will find the paper doable. Another test is, if you feel like whether this optional subject is good for you or not, what you will do, you will see the last year's question paper. It is available on UPSC website, or anyone can buy this book from the market. It's hardly 100 rupees book, and it is a collection of previous year's question paper, right? So let's say you see question 2020 question paper. Then you see, okay, they are asking what is Delphi technique, Delphi window. Johari window. Johari window is different. Delphi technique, is the kind of method of forecasting, right? Qualitative method. Then they are talking about difference between goals and objective. What the Adam Smith had to say about public interest. Then how if you classify it, id, ego, super ego. Some then question about on Government of India initiative of startup and entrepreneurship. So can you see here management is related to your GS preparation. How Government of India startup, Startup India, and your entrepreneurship definition. Now see, when you write answer for in this section, do not write very loose answers. Write the way economic surveys have been written. If you want to say something about Startup India, do not write the way newspaper is written. No, write the way economic surveys are written, the way NCRTs are written. So that is one thing. So I do not want to go into syllabus at this stage, but to give you whether management option is whether a correct option or not for you, what you have to do, you have to look for previous year's question paper, right? MFP, OB, HRM, and these 3 modules are connected. Let's say you cannot segregate them. You cannot say, okay, this question is from OB only, not.
इसका प्रोफेशन होलिस्टिकली होता है. Books, I can tell you books name, but see again, वो books. Now this is, I believe, not a good strategy to say, okay, for OB only this book you have to read. No. I will not suggest that. What I will suggest, whatever book you used during your graduation time, but it should be a good book, right? Let's say for OB you used Robbins, right, or IGNU material. So those are good books for OB HRM in this part. Or if you are not okay with the books, our study material will holistically cover. In fact, we have developed 12 booklets for management, and we can assure you, we don't say 100%, that thing we will not claim, but yes, 80 to 90%. If you read our study material, you need not to look anywhere. And in fact, this study material will tell you exactly what to study, right? Otherwise, if you read standard books, see, reading standard book is important. That gives you a refined thought. And secondary sources, and if you will rely completely on secondary sources, that is a problem. What you have to do, first build your thought process through standard books, then use secondary process to score more marks, right? To do what the UPSC is looking for. So this is what I have to say about paper 1 section A. More or less similarly, same thing is happening in paper 1 section B as well. Here questions are from fin, account and marketing. Let's say suppose you start preparing for fin. Finance itself is a big subject, right? Finance is, you have to study mathematics for that, No, that way you are not going to tackle UPSC finance. What you have to know, okay, in finance UPSC is asking 20 questions. And if you observe last 10 to 15 years question paper, you will say, okay, there are 20 questions, 20 PYQs which UPSC asks year after year. Let's say question on MM hypothesis, Gordon-Walter model, leverage, right? Cost of capital, WACC. ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है. इस पे आपके 2 पेजर रेडी होने चाहिए. 2 पेजर मीन्स यानी एक जैसे मान लीजिए आपने बनाया किस पे, लेट्स से लेवरेज पे बनाया. ओके, लेवरेज पे यू मेड इट 2 पेजर एंड यू नो द क्वेश्चन. यूपीएससी किस तरह क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज लेवरेज, व्हाट इज फाइनेंशियल लेवरेज, व्हाट इज कंबाइंड लेवरेज, व्हाट इज ऑपरेशनल लेवरेज. And so what you will do, you will write the formulas of let's say financial leverage, then operational leverage, then combined leverage. Combined leverage is equal to financial leverage into operational leverage. Then there have been 2-3 numericals from previous year's question. Those you will solve in this paper. And this thing you will find in our study material. वो आपका हो गया, उसको रिवाइज करते रहो. When you will keep on revising that, उस तरह आप टैकल कर सकते हो फाइनेंस ऑफ मैनेजमेंट. अदरवाइज फाइनेंस इटसेल्फ इज बिग वर्ल्ड. So same thing you will follow for account. Let's say account, I will suggest you to go through class 12th NCERT, class 12th and 11th NCERT account, right? Business उसके accounts की book है. I have observed some questions have come directly from here. Let's say reconciliation of financial and cost accounting. एक क्वेश्चन है, राइट? इनडायरेक्ट कॉस्ट मेथड. डायरेक्ट क्वेश्चन आया एनसीईआरटी से. ओके, सो ऑल्दो इट इज 11th क्लास 12 बट दिस इज इंपॉर्टेंट. सिमिलरली फॉर मार्केटिंग, कॉटलर आप पढ़ लो, कॉटलर से रिवाइज कर लो, उसकी समरी और वो सब आपको हमारे स्टडी मटेरियल में मिलेगा. ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव टू से अबाउट पेपर 1 सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. एनी क्वेश्चन सो फार? प्लीज, you want to ask any questions? Okay, so this is my session. I can read many questions from this. लेकिन सी सजेशन वही है कि आप लास्ट ईयर के 4-5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखो. इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दैट, देन मैनेजमेंट इज ए वंडरफुल ऑप्शनल. इसका सक्सेस रेट और मैं बता दूँ आपको. इफ़ यू सी द सक्सेस रेट ऑफ मैनेजमेंट ऑप्शनल, राइट? मैनेजमेंट ऑप्शनल. आप आरटीआई देखो, यू सी द एनुअल रिपोर्ट एंड एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ यूपीएससी, यू विल फाइंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑप्शनल सब्जेक्ट. ओके, ईयर आफ्टर ईयर मोर देन 10%. जनरली इसको 80 to 100 स्टूडेंट विल ऑप्ट दिस, जिसमें 50-60 मेंस लिखते हैं. एंड दीज आर वेरी क्वालिटी स्टूडेंट,
Okay, from my last 6 years teaching experience, I can tell that almost 60% people इसमें होते हैं top 10 B colleges, top 10 B colleges of India, right? Let's say IIMs, FMS, right? उस तरह के colleges हैं, auxiliary वगैरह के, तो wonderful, and they have given results year after year. Highest score so far in this आयुष शर्मा ने score किया है, आयुष शर्मा, right? He scored 320 marks in management. I think 2016 और 17 और 18 में था, आप देख लीजिएगा. जनरली जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं वो इस रेंज में स्कोर करते हैं, 290 to 310 का उनका स्कोर होता है. दिस इज जनरली इन दिस रेंज मैनी पीपल हैव स्कोर्ड. नाउ टू से कि ये सक्सेस रेट हो गया मैनेजमेंट का, मोर और लेस दिस. सो बट अगेन सी यू आर ए स्टूडेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, you know you will study statistics management. You cannot compare data on 1 year. So let's say you say okay, this year management success rate was 10% and let's say sociology success rate was 8%. So sociology management is better than sociology. No. Or sociology is better than, or let's say some other optional subject, let's say some literature subject success rate is 12%. So you say okay, this is better than, no. Statistics will not, you know, as a student of statistics you have to compare data over a range, over 4 or 5 years range. When you compare that, then you will realize, see, you will make a statement like this: more or less all optional subjects success rate is uniformly distributed, right? Now आप देखो तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. Yes, फर्क किसका पड़ता है? What is your education background? Let's say somebody has done BBA, MBA और engineering, उसके लिए उस इंटेलेक्चुअल लेवल पे पहुंचना विल बी इजी. आप कोई नया ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हो, लेट्स से लिटरेचर और समथिंग ह्यूमैनिटीज, उसमें टाइम लगेगा, राइट? 1-1.5 साल तो उसी में निकल जाएगा टू बिल्ड दैट. सो व्हाई नॉट टू बिल्ड अप ऑन योर फाउंडेशन? तो दिस इज टू थिंग्स आई हैव टू से अबाउट सक्सेस रेट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट. नाउ लेट मी शो यू सम पार्ट ऑफ आवर स्टडी मटेरियल. ओके, सो लेट्स से okay, let's say this is for this is our simplex. Simplex is the part of linear programming. जैसे आप मान लीजिए पेपर 2 में, आप पेपर 2 में क्या है आपका, जस्ट पेपर 2 में पहले बता दूँ. यस, पेपर 2 में अगेन आपका पेपर 1 सेक्शन ए में क्या है, क्वाम, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, देन OM, ऑपरेशन मैनेजमेंट, एंड MIS. दिस इज वेरी स्कोरिंग पार्ट. यदि आप इफ यू आर गुड इन न्यूमेरिकल्स, दिस इज वेरी वेरी स्कोरिंग. सेकंड इज GBI, IB and strategy. This has big overlap with your GS3 paper. Okay, economy. यहाँ पे आपको foreign trade policy. See, GBI, IB nothing. This is all about 20 questions. आप इसको 4-5 days में कवर कर सकते हो. If you know exactly what to read, what not to read. इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़नी है, NCERT का एक चैप्टर है इंटरनेशनल बिजनेस, इसको तो आप स्किप ही नहीं कर सकते. दैट इज, वहीं से क्वेश्चन आता है. स्ट्रेटजी के लिए हमारे नोट्स पढ़ लो, 5 days में कंप्लीट हो जाएगा. गिवन ये PYQ सॉल्व कर लो, हो गया. क्वाइम OM इसमें टाइम लगता है. ओके, यहाँ पे टाइम लगता है. सिमिलरली फिनोर अकाउंट में टाइम लगता है. हियर यू हैव टू मेक फाउंडेशन. टिल यू डू नॉट नो व्हाट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग, व्हाट इज ANOVA, व्हाट इज व्हाट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये नहीं हो पाएगा. तो यहाँ पे टाइम लगेगा. फॉर दैट we got expertise in that. We assure you within 1.5 months, you go through our lecture course, see our PYQs, within 1.5 months you will reach that position that you will be able to score 80% in this section. 100% score करने के लिए टाइम लगेगा, but 1.5 months में we will help you reach this stage, given कि MB में थोड़ा पढ़ाई किया हो, राइट? ऐसा नहीं कि let's say somebody says I even do not know what is normal distribution, तो उसको फिर 3-4 महीने लग जाएगा. Otherwise, if you are okay, you understand what is normal distribution, what is uniform distribution, you know the Bayes theorem, we will go at a fast pace and इसको 1.5 months में आपको उस लेवल पे पहुंचा देंगे. ओके, नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको क्वाम भी पढ़ना है. आप क्वाम के लिए एक नया स्टैटिस्टिक्स का बुक पढ़े, उसकी जरूरत नहीं है. हियर आल्सो यू मस्ट गो थ्रू PYQ अप्रोच. लेट्स से आपको पता है क्वाम में एक क्वेश्चन हमेशा आता है लीनियर प्रोग्रामिंग का. लीनियर प्रोग्रामिंग में भी आपकी 3 चीज़ें आती हैं. क्या क्या? फॉर इंस्टेंस दे विल ऑलवेज आस्क सिंप्लेक्स मेथड, ग्राफिकल मेथड और शैडो ऑपरेशन. ओके, ये 3 पता है, आपको पता है कि आप कर लोगे. फिर रिग्रेशन में भी
कोई कॉम्प्लेक्स रिग्रेशन नहीं है. ओके, सिंपल रिग्रेशन, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओएलएस पे क्वेश्चन आते हैं. सिमिलरली यू नो डिसीजन मेकिंग पे आता है, व्हाट डिसीजन ट्री आएगा या और आपका वो हर्विज एंड लाइक्लीहुड मेथड उसमें से कोई आएगा. ओके, सो नाउ वंस यू नो कि ओके मेरा सिंप्लेक्स पे क्वेश्चन आता है, देन जस्ट सॉल्व यूपीएससी पीवाईक्यूज एंड प्रिपेयर योर नोट्स. From our institute at Lukmaan IAS, you will get notes like this, both handwritten, typed, So, जैसे for example simplex का है, then how to make your objective function, किस तरह का objective function होता है. Okay, this we have taken an example. How to convert into standard form, किस तरह convert करते हो आप. Standard form में इसको objective function को convert किया है. Then उसकी simplex table आप किस तरह बनाते हो. Okay, then how you solve it through incoming and outgoing variable, right? This is the way you solve it. Incoming, outgoing. उसके बाद this is it's kind of we have written it very step by step how to solve a simplex. If you understand this this question, you can solve. I can guarantee you can solve any simplex question paper in UPSC because this is much more difficult. So this is the way we have written this hand material. Let me show you another difficult topic is decision tree. Decision tree is an important difficult topic, and let me show you just a minute. Okay. Now there came a question in 2012, which is perhaps one of the most difficult question in management so far. Let me show you. Okay. Yes. ये क्वेश्चन आया था 2012 में. If you see 2012, question number 8C. This is the question number. Okay, it is written here. Question number 8C. This is question 8C 2012 paper 2, and it is on Black Gold Oilfield Company. It is a question on decision tree. This is if you can solve this question, इसका फिर हमने solve किया है. If you remember in just 2-3 classes back we also discussed this. तो आपको study material में ये सब मिलेगा. आप देख रहे हो? You will get the question this will. उसको किस तरह solve करना है step by step. Oil का worth ये था, okay, and उसका किस तरह आपको probability लेनी है, किस तरह उसमें base theorem लगानी है, okay, then उसका ये आपका decision tree हो गया. So all these help you will get. If you will do, aspirant will do it at their own, तो इसमें काफ़ी time लग जाएगा. So that is the utility of a teacher, that the teacher can save you, save your time and help you crack this examination. Similarly, let's say not only this, we have not only provided, ये आपके other है, these are the solutions of other PYQs. ये question आया था आपका, let's say this question came in 2015 on decision tree. Not only this, let me also show you. Just a minute. We have also discussed much more difficult question. Okay, this question is here. Let me show you. किधर गया? हाँ, this question. This is a question of Walktech Manufacturing Electronic Company. If you can you see the question ही आपका 3 pages का है. If you can solve question like this on decision tree, it's a very very complex, which we discussed in our class, and you will get recording as well. If you see this question, even mathematics optional may be, or if you can solve question like this, you can imagine how much complex it is. कितने सारे decision points है, कितनी varieties है, कितना base है. So that kind of guidance and that kind of rigor you will get from our classroom program. And these are the other parts. Let's say I think this is the second part, and this is the third part. So what my point is, if you can solve question like this during practice, so in a UPSC examination scenario, you would be able to solve a decision making problem in
let's say 20 minutes, and that will fetch you 20 marks assured. So that is one thing, right? Now let me show you question paper. What I can do, let me, ये हो गया, okay. Question 2021 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं. ये 21 का है. वी कुड हैव आल्सो सीन किस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है. ओके Okay, globalization seems to be at crossroads, and increasingly large number of countries embrace the neo-nationalism. Okay, on the doctrine of self-reliance, briefly explain the concept of globalization, critically evaluate the impact of going neo-nationalism on Indian farmers and suggest strategic measures to affect it. Now see, अब आपके globalization की definition आपको बताना है. Now you will think what kind of definition. You have to remember, sometime in essays also you write an essay on globalization in essay paper. For that, reading globalization chapter from NCERT class 10th and 12th is very, very important. If you have 2-pager, if in a notes you have written about globalization from there, just put in your notes and try to write that kind of definition in your paper. Do not worry that it's a management question. Same, that is a wonderful definition that will apply also in management. Okay, then self-reliance. See, this question paper. The question is of this kind that you will not get answer of this question directly in textbook. You have to apply your mind. आपको पता है, okay. The countries are embracing new nationalism. ठीक है? You know what is globalization. Now, how this, the impact of new nationalism on Indian farms. See what is happening. US भी अपना import कम कर रहा है. Okay. India is also reducing its import. So how it will? So mainly किसको affect करेगा? The Indian firms which are exporting. Let's say export of India से किसका export ज़्यादा होता है? Rice mill, basmati, okay, agri products, and let's say guar gum, buffalo meat. These are the big exporters. IT products, or let's say refined oil products. These are the one major exports. So how it will affect that? So now if in 10 marks you can show examiner, okay, this is your width of knowledge. You know what are the major exports. You know the exact definition. See, not say exact, good definition of globalization. Okay, then you can write point from, let's say, foreign trade policy, which you will read for international business part, and you can relate it. Then a beautiful answer will come. See, generally, let's say I can write 2-3 answers for this question, but that will not help you. What will help you? I can tell you. See, I can write an answer. मेरे लिए कोई problem नहीं. I can write. उससे आपका यानी how the aspirant will get benefit. Aspirant will get benefit when they have created that 2-pager on globalization. Then they have summarized the national foreign trade policy. When they have summarized the economic survey, then they have revised it 2-3 times. They have written the answer, and a teacher has evaluated that. That is the process which will help aspirant. And for that, our study material and our classrooms are there. Let's say second question. What is personality? How big 5 personality traits differ from predictive work behavior? Let's say personality की definitions है. Okay. गॉर्डन की definition है, आपकी रॉबिन्स में जो definition दी है वो सकती है. Big 5 personality model क्या? Ocean, right? You know the keyword is ocean. Just a minute. Okay. So see, आप big 5 model है. ये क्या हो रहा है इसमें? Okay, so just a minute, क्या हो रहा है? I'm little hang क्यों हो रहा है? Okay, anyway, so it talks about extrovert, right? Then non-neuroticism, right? Agreeableness. तो वो 5 key terms है. उसको आप define करो. आपके 2-pager में notes में होना चाहिए from Robbins और from our notes, और उसको वहाँ पे लिखना है, right? So ये question straightforward है. हैंग हो गया. जस्ट अ मिनट. क्या हो रहा है? एनीवे, ये लगता है हैंग हो रहा है इसको. बट एनीवे, सी क्वेश्चन. आई विल रीड क्वेश्चन फ्रॉम हियर.
Question number 21. Question number paper year 21. Okay, next question is why do organization differ in their structure? Let's say structure की बात हो रही है. Okay, so you know the simple structure is there, then divisional structure, functional structure, matrix structure. So why do they differ? Due to because as the organization enlarge and become complex, they have to adopt a different structure. Remember, the important point is your structure should follow strategy, not other ways. Study should not follow structure. This point you have to somewhere write in your answer in UPSC mains. Okay. Then they are talking about the 9 most identified power techniques. अब रॉबिन्स का जो लास्ट चैप्टर, आई थिंक नॉट लास्ट, 12th chapter something, they mentioned about power, right? Different models of power, and they mentioned about 9 tactics of power. वो आपको लिखना है. उसको किस तरह strengthen करना है your answer, किस तरह extra point आएंगे, that we will tell through our study material, right? Then they are talking about the concept of culture, Hofstede model. I think this is fine. Then see, section B में इन्होंने बात किया है what is swap, what are the common types of swap. Simple question. Then they are talking about what is variance analysis. See, variance analysis is a favorite question of UPSC. Okay, variance analysis में इसमें कुछ नहीं है. You know, different types of variance है, वो आपको explain करने आते हैं. Okay, उसको किस तरह कैलकुलेट करने, वो 3 फॉर्मूले वो आपको बताना है. एक एग्जांपल लेके उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट? देन सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज व्हाट आर द पॉसिबल रीजन फॉर डिफरेंट कॉस्ट वेरिएंसेस. सो प्राइस वेरिएंसेस, कॉस्ट वेरिएंसेस. सो सी व्हाट माय पॉइंट इज, यदि आपका वेरिएंस एनालिसिस एक 2 पेजर रेडी है, इफ यू हैव दैट नोट रेडी, देन यू कैन राइट एनी क्वेश्चन ऑन अकॉर्डिंग टू दैट. ओके, देन देयर इज अ क्वेश्चन ऑन ओके, ब्रेक इवन एनालिसिस पे एक न्यूमेरिकल आया है. सी, पेपर 1 सेक्शन ए में भी आपके यानी आपके न्यूमेरिकल्स हैं. पेपर 1 जस्ट मिनट, हैंग क्यों रहा है पेपर? यस, अब ठीक है. पेपर 1 सेक्शन बी आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं जनरली फिन एंड अकाउंट से. फिन में आपका लेवरेज पे न्यूमेरिकल आता है, कभी कभी आपका लेवरेज पे तो आते ही आता है. ओके, देन यू माइट हैव न्यूमेरिकल फ्रॉम वैक. ओके, वैक पे भी न्यूमेरिकल है. देन आपका लीजिंग पे भी न्यूमेरिकल है, राइट? देन MM मॉडल पे, राइट, न्यूमेरिकल तो नहीं है बट इज फ्रेमवर्क दे आस्क, राइट? फ्रेमवर्क दे हैव आस्क्ड. देन उसके अलावा लीजिंग पे हो गया, बैक पे हो गया, वेरिएबल यू नो ब्रेक इवन कॉस्ट वगैरह, वो तो अकाउंट का पार्ट है, उसमें भी न्यूमेरिकल है. सो दे आर 5-6 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल विच दे आस्क इन फिन एंड अकाउंट. जनरली अभी तक क्या हो रहा है, 70 to 80% पार्ट इज स्टिल ओके. अब अभी ओके, सो 70 to 80% part is still your theory, and only 20 to 30% part is your numerical. Let's say this is a numerical. During the current financial year, generated profit of so and so, sales इतना, variable expenses इतना, fixed expenses क्या हैं आप जानते हो. Profit is equal to what is profit? Revenue minus cost. ओके, कॉस्ट में आपके 2 कॉस्ट होते हैं, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, राइट? अकॉर्डिंग टू आप उसको लाओगे, इसमें आप निकाल लोगे ब्रेक इन पॉइंट के लिए क्या आप करोगे, प्रॉफिट को 0 कर दोगे, राइट? सो ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी सॉल्व. सी, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. ये इवन आपका इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है. वी विल डिस्कस इट. ये जैसे कैट के क्वेश्चन होते हैं ना, वो कर सकते हो, लेकिन सी वहाँ पे क्या होता है, एग्जाम में प्रेशर में रहते हो, सो नहीं हो पाता है. One aspirant told that he could not do this question in examination. He left it because just he got confused. It's a numerical. But if you think calmly, it will hardly take 5 minutes. It is 20 marker. Okay. ये है okay.
Balance sheet of future, what are the major factors? Suppose just quantum working capital requirement. Okay, what working capital? See, working capital. हाँ, एक और क्वेश्चन है. What are the strategies to manage working capital? There are 3 strategies, right? And one is matching, one is aggressive, one is being conservative. So those are 3. So working capital भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा. Okay. ये what are the major factors which require working capital requirement? ये simple theory question है. It is nature of business, right? How large is the organization? Your quantum of fixed capital. But इसको ऐसे नहीं लिखना है. When we will discuss it deeply. So this I have shown you paper 1 of 2021. Let me show you some more. Okay. Okay, let me also show you some notes. Our notes on paper 2. Okay, these are our some OM notes. Let's say development of OM, cost focus. इसमें handwriting भी और दोनों है. Knowledge societies, what is operation management, right? Or something about Taylor, cost of quality. These are the UPSC question, right? उसका simple answer है cost of quality क्या है, right? There are 4 costs: prevention cost, appraisal cost, internal variance, external cost. Okay, this way you can write. Then different type of ISOs. 7. See, this again was a UPSC question. 7 tools of total quality management, right? TQM. आपकी इकोनॉमिक सर्विस में भी हम मेंशन होने लगा है. तो UPSC directly ask what are the 7 concept of effective continuous improvement. Continuous improvement means Kaizen, Sigma, right? Six Sigma both side. Employee empowerment, JIT, just in time. Okay, just in time has a trade-off with MRP. When we will discuss, see if you understand this statement कि just in time और MRP में एक trade-off है, तो आप बहुत कुछ समझते हो मैनेजमेंट में. And how that अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते. जब we will go to into class, then we will see. PD plan model, 6 Sigma. Okay. So this is again 7 tools of TQM. Scatter diagram, cause and effect diagram. Okay. Let me. काफ़ी बड़ा है ये PDF. Then these are C charts. C charts भी आपका क्वेश्चन में है. Aggregate planning again is a favorite topic of. अभी तो नहीं पूछ रहा है 4-5 years से, क्योंकि इस पर numerical lengthy होते हैं. Okay. Hang हो रहा है. I don't know why it is hanging. Okay. 4 things are needed for एग्रीगेट प्लानिंग. बट एनीवे आपने थोड़ा आइडिया लग गया है किस तरह के क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, किस तरह का स्टडी मटेरियल है. सो दिस इज व्हाट आई वांट. लेट मी सी सम क्वेश्चन फ्रॉम 2021 पेपर. पहला क्वेश्चन क्या है? द मीन एनुअल इनकम ऑफ वर्कर्स इज सो. मीन दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, एंड इट इज सस्पेक्टेड दैट लोकल वर्कर्स have higher than average income. फिर उसके number of workers दे रखे हैं, and sample mean income is found. Okay, see normal distribution का question है, simple normal distribution का question. There, so इसमें I think कोई problem नहीं होनी चाहिए आपको. Okay, what I will do, ये थोड़ा सा hang हो रहा है. What I will do, I will go to the question paper. Yes. This is the question paper. Okay. ये किस ईयर का है? This is year. Okay, this is 22. ठीक है, 22 का देख लेते हैं. क्या है? What is the question? A newly constructed house can collapse due to design fault in its design. It can also collapse. It does not have a design fault. Okay. House collapses without any fault design is, what is the probability that it is due to fault in design?
ये सिंपल बेस का, यानी बेस से भी कर सकते हो या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से भी कर सकते हो। सिंपल एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ओके आपको एक 2x2 मैट्रिक्स बनानी है, हाउस फॉल्ट, नो फॉल्ट और आपका कोलैप्स, नो कोलैप्स, राइट, डिज़ाइन में, उससे आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। वी आई हैव ऑलरेडी सॉल्व इट एट दिस मोमेंट, आई एम नॉट इन ए मूड टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। देन व्हाट अबाउट, ये हैंग क्यों हो रहा है बार बार। देन दे टॉक अबाउट डिफाइन नॉलेज बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम। सी नॉलेज बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम इज जनरल क्वेश्चन। अब आप इसको कैसे लिखोगे, इसमें MIS से आप लीजिए, ओके MIS के जो नोट्स हमारे, ओके जो डायग्राम है पिरामिड वाला, वेयर वी टॉक अबाउट द ट्रांजेक्शनल, देन MIS, देन नॉलेज बेस्ड सी सिस्टम, वो डायग्राम आपके इस क्वेश्चन में आना ही चाहिए। यदि वो डायग्राम नहीं आ रहा है तो इसका अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ओके। सो दिस इज वन थिंग, लेट मी, ओके सी रिग्रेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक है UPSC का। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने रिग्रेशन भी है, डिसीजन मेकिंग भी है। आई थिंक लेट मी सी वन क्वेश्चन, ओके ये क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 4A और 4B ऑफ 2021। इसमें क्या है, 12 सेल्स मेन्स आर रैंक्ड फॉर देयर इफिशिएंसी एंड लेंथ ऑफ सर्विस। तो डेटा दे रखा है, उनका इफिशिएंसी का डेटा दे रखा है और उनका लेंथ का डेटा दे रखा है। देन दे आर आस्किंग अबाउट द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सी पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज डिफरेंट, वो आप निकालते हो, वो किस तरह निकालते हो पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यू से, ये क्या हो रहा है, क्या हो गया बोर्ड में, व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट टेक अनदर थिंग। कुछ प्रॉब्लम हो गया लगता है इसको भी। Anyway, see what my point to say, there are two types of correlation coefficient. One is Pearson correlation coefficient. How do you calculate that? Simple, you know the regression equation, y is equal to beta 1 and 2x plus your intercept. जो आपका बीटा है that is nothing but your slope. How you calculate slope? By covariance x by upon sigma x square. Okay, if the dependent variable is y. Suppose now you have to calculate the correlation coefficient. Okay. So how you calculate it? Covariance xy upon sigma x into sigma y. That is the Pearson correlation coefficient. But in this they are asking rank correlation coefficient. उसमें सिंपल कुछ नहीं है, उसका भी एक फॉर्मूला है. That formula is nothing but 1 minus sigma di into the di square upon n into n minus 1, where n is the number of observation and d is the difference between the ranks. Okay, the difference between the ranks. So that's जो मीन रैंक से जो डिफरेंस, एक तरीके से स्टैंडर्ड डिवीजन हो गया. ओके, जो मीन से जो डिफरेंस है, मान लीजिए आपने सारी रैंक को उसको अरेंज किया और जो हर एक की रैंक को देखा कि मीन रैंक से कितना डिफरेंस है, उसका डिफरेंस लेके उसको स्क्वायर करोगे, उसको डिवाइड कर दो किससे, n इंटू n माइनस 1. n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. इसमें कितना ऑब्जर्वेशन है, आई थिंक इसमें है 10-12 ऑब्जर्वेशन है, उसको आप कनेक्ट कर लोगे. ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन है. ये क्या क्वेश्चन है. ओके, सी ये 10 मार्कर में दिया है, बट ये कभी कभी यूपीएससी को क्लियर नहीं होता थी. दिस इज ऑलमोस्ट 15-20 मार्क्स क्वेश्चन. लेकिन इसमें क्या है, इसमें डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन व्हेन दे आर डिपेंडेंट. ओके, वाला लगाना है आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग से फॉर्मूला, राइट. तो क्वेश्चन सब इजी है. सी इसमें क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा नहीं है. क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है. इसमें सी हियर दे आर आस्किंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट, सिंपल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट. क्या है आपको सिंपल, यानी व्हाट यू हैव टू डू, सी टू नो एग्जैक्टली यू हैव टू गो थ्रू अवर रिग्रेशन लेक्चर. बट इसमें आपको बीटा कैलकुलेट करना है. और बीटा क्या है, स्लोप है. स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हो, कोवेरियंस अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर. इंटरसेप्ट कैसे कैलकुलेट करते हो, उसका रिग्रेशन इक्वेशन का मीन ले लेते हो, उससे बीटा 1 बीटा 2 मिल गया. देन यू कैन प्रेडिक्ट द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन. कुछ नहीं, सिंपल होते हैं. देन डेवलप ए लीनियर रिग्रेशन मॉडल यूजिंग इट. ठीक है, इसमें जस्ट ए मिनट, क्या हैंग क्यों हो रहा है ये. चलिए एनीवे, इसको हैंग रहने दीजिए. नाउ लेट अस मूव टू, आपको आइडिया लगाया नहीं है, MIS से जनरली क्वेश्चन आता है जैसे ERP क्या है, राइट.
DSS पे दे ऑलवेज आस्क ए क्वेश्चन, DSS OM से 80% थ्योरी आता है, OM नॉट 80, आई शुड से 90% यू विल गेट थ्योरी फ्रॉम OM एंड QM. तो कभी कभी थिंकर्स क्या नहीं पूछते हैं, जैसे फिलिप क्रॉस्बी का क्वालिटीज फ्री, राइट, डेमिंग का मॉडल, PDCA मॉडल, राइट, इसमें जोसेफ जुरैन के, राइट, ट्रिनिटी, उस पर क्वेश्चन आए. तो दैट यू विल गेट फ्रॉम आवर नोट्स और किसी भी स्टैंडर्ड बुक से, अच्छी स्टैंडर्ड बुक से. फॉर एग्जाम्पल इधर यूज हैजर, स्टीवेंसन, उस तरह के बुक से आपको आंसर मिल जाएगा. ओके, डिसीजन ट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये. लेट्स से पेपर 2 सेक्शन बी, अब उसमें जाते हो. उसमें क्या आपके 3 पार्ट है, गवर्नमेंट बिजनेस इंटरफेस, इंटरनेशनल बिजनेस एंड स्ट्रेटजी. स्ट्रेटजी बहुत क्लियर कट है, उसमें भी 15-20 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो आपको करना है. उसका सिंपल सा वे है, यू गो टू द PYQs, गो थ्रू स्टडी मटेरियल, उसको रट लो. 30-40 पेजेस के नोट्स हैं, स्टडी मटेरियल है, उससे आपका आई कैन अश्योर यू 80% स्टडी हो जाएगा UPSC में. ओके, नाउ फॉर गवर्नमेंट बिजनेस इंटरफेस एंड IB, यहाँ पे आपको कोई बुक काम नहीं है. नहीं, बुक तो नहीं, मैं बोलूँगा यू हैव टू गो फॉर रिपोर्ट्स. लेट्स से आप इकोनॉमिक सर्वे, आप यू आर रीडिंग इकोनॉमिक सर्वे फॉर GS3, वो वहाँ पे काम आएगा. देन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंटरनेशनल बिजनेस चैप्टर ऑफ NCERT, ओके, दैट वी हैव शेयर्ड इन अवर नोट्स एज वेल, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है. आवर GY/IB नोट्स, ओके, ये हो गया. देन PYQ सॉल्व करो. लेट्स से मोड्स ऑफ एंट्री इनटू फॉरेन मार्केट, ये UPSC क्वेश्चन है हर बार. ओके, इस बार देखिए 2021 में इन्होंने क्या पूछा है. लेट्स सी, हियर देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशनल बिहाइंड लिबरलाइजेशन स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी. New industrial policy went for liberalization. New industrial policy means not this industrial policy, 1991 policy, right? When the LPG era came. So why they adopted for liberalization? There is a long story. You know, before that was a Hindu growth rate, right? Then they went for your liberalization. If you remember in 2016 or 17, UPSC asked question in GS3 economics, first question. Okay, due to this LPG era, there has been an informalization of workforce, contractual workforce, right? जो फॉर्मल वर्क है वो कम हो रहा है, तो वो एक इसका प्रॉब्लम भी है. लेकिन वो प्रॉब्लम ठीक है, बट द क्वेश्चन हियर इज व्हाई इट केम, व्हाट वाज द नीड. तो नीड वाज टू ब्रिंग इन एफिशिएंसी, राइट, मेक इंडिया मोर कॉम्पिटिटिव. कुछ क्या क्या नीड, दैट यू हैव टू राइट हियर. ओके, एंड सी हियर आल्सो व्हेन यू राइट, यू कैन नॉट सिंपली राइट ओके, इसको हॉलिस्टिक आंसर लिखो. फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल एस्पेक्ट लिखो, इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल. सो इफ यू कैन शो दीज मॉडल्स, फॉर एग्जाम्पल आपका पेस्टल मॉडल होता है, मैनेजमेंट स्टूडेंट नो, राइट, पेस्टल, उसको रिफ्लेक्ट करो इसमें कि व्हेन यू राइट द कॉजेज व्हाई इंडिया अडॉप्टेड लिबरलाइजेशन इन न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, गिव द 6-7 कॉजेज फ्रॉम पॉलिटिकल टू टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, राइट. सो दिस इज द वे यू विल राइट आंसर. लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन. दिस इज रिलेटेड टू करंट. व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ब्रेक्जिट, ब्रिटेन एग्जिटेड, राइट, ब्रेक्जिट. तो उसके सी, अब उसका आंसर ऐसे मत लिखो जो व्हाट इज रिटन इन न्यूज़पेपर, नो. सी व्हाट द इकोनॉमिक सर्वे हैज रिटन, व्हाट द लेट्स से NCERT में कुछ ऐड हुआ है तो उसको देखो, या गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, नीति आयोग का एजेंडा, ट्राई टू राइट दैट थिंग. ट्राई टू अवॉइड न्यूज़पेपर में अदर देन एडिटोरियल आई डोंट सजेस्ट रीडिंग मच. Then there is a question, what is Porter, value chain model. I think this is easy. Primary activity, secondary activity, there are 5 steps: inbound logistic, outbound logistic, then your inbound logistic, inbound, outbound manufacturing, then service, then feedback. Okay, then you make your some secondary activities, HRM, one of them is HRM, right, administration, और वहाँ पे मार्जिन होता है. ये आपको मॉडल लिखना है, इसका क्या यूटिलिटी है, पॉटर ने क्या दिया था. सी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितना 5 का है, कितने का है, 10 मार्क्स, सॉरी 5 मार्क्स का है. इसमें आप कितना लिखोगे, आपको सिंपली डायग्राम बनाना है. पॉटर ने किस बुक में दिया था, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में, वो लिख दो, डायग्राम बना दो, उसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लिख दो एंड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट. ओके, लेट्स से इस पे फॉरेन ट्रेड के डॉक्यूमेंट्स जो हैं, इस पे बहुत UPSC का फेवरेट है, ये आपका रेडी होना चाहिए. And this you will find through, we have mentioned it, all the important documents, definition in our study material. ये आपके जो गवर्नमेंट के जो रिपोर्ट्स हैं वहाँ से आप लीजिए.
ओके, फॉरेन ट्रेड एग्जिम बैंक की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाइए, देयर यू विल फाइंड द गुड definition. Letter of credit, bill of lading, commercial invoice, consular invoice, insurance certificate. This is the definition UPSC is asking. Fine. So, बाकी स्टडी से क्वेश्चन है, why are mergers and acquisition gaining popularity among Indian corporates? Is it possible to take over a target company in a hostile manner? Let's say अब ये क्वेश्चन सिंपल है, can you take over a company in hostile manner? अब आपको सिंपल ऐसे नहीं लिखना है, जनरल आंसर है। सी अब यहाँ पे अपनी नॉलेज शो करो, ओके, उसमें एग्जांपल पहले तो कोट करो, ओके, देन इफ यू नो समथिंग लाइक लेट्स से यू आर स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटजी, यू नो व्हाट इज लेट्स से पैराशूट, यू नो गोल्डन पैराशूट क्लॉज। गोल्डन पैराशूट क्या है, टेक ओवर भी किया तो जो टॉप मैनेजमेंट है दे विल गेट गुड मनी एंड दे कैन फ्लाई, दैट्स व्हाई दे हैव कॉल्ड इट गोल्डन पैराशूट, राइट? Green mail, if you understand golden parachute, you know green mail, you know the clauses and your कौन सा एक्ट है, I've forgotten this, bankruptcy code, right? Bankruptcy code, सरफेसी को रिलेट कर, सरफेसी को कैसे रिलेट कर सकते? सरफेसी का मेन क्या पॉइंट है? When the Surfacy Act came, it gave the powers to bank that यानी अपने जो लॉसेज हैं उसको रिकवर करने की पावर ज़्यादा होगी बैंक्स को। Even going through the, I will not say without going through judicial process, but उस judicial process को थोड़ा sideline कर दिया सरफेस ने कि banks now have more power, they can recover their losses. So that is the main essence of सरफेस। उसको आप relate करो कि इसमें then आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हो, ओके, जैसे बहुत सारे टेक ओवर्स हुए, राइट? लेट्स से आप दोनों लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल एक नेशनल एग्जांपल लिखो, जैसे बैंक ने नेशनलाइजेशन बैंक हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बहुत सारे मर्ज हो गए, ओके, दिस इज नॉट टेक ओवर बट दिस इज मर्जिंग। इसी तरह बहुत सारी कंपनी ने टेक ओवर किया, लेट्स से दिस व्हाट्सअप, राइट? they have taken over, this was taken over by Facebook. So this example you can quote, if you know the details you can mention all those things. So what will depend is the quality of your thoughts and how intrinsically you can connect it with other parameters. See, I give you a kind of a talisman. You know what talisman? Let's say you are writing management answer and there are 12 models, paper 6 model, paper 2 6 model. आप कोई आंसर लिख रहे हो तो इस तरह सोचो, क्या मैं इस क्वेश्चन में बाकी मॉडल्स को कनेक्ट कर सकता हूँ? लेट्स से कोई भी क्वेश्चन है, क्या इसमें मैं आई कैन ब्रिंग इन ओबी एक्सपेक्ट, एचआरएम एक्सपेक्ट, फिन एक्सपेक्ट, अकाउंट एक्सपेक्ट, देन एमआईएस एक्सपेक्ट, स्ट्रेटजी? तो वो एक बहुत होलिस्टिक आंसर बनेगा एंड दैट वुड दैट काइंड ऑफ आंसर आई बिलीव द प्रोफेसर इज लुकिंग फॉर, एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर, ओके? सो दिस इज व्हाट आई हैव टू से regarding you can guys, just a minute, I think I will show you one more thing. Here you can enroll for our course. I will show you where it is. Okay, I will show you the web page, right? इतना स्लो क्यों चल रहा है ये? Why? What I mean to say, you can go to our website and from there you can enroll for the course. What we are offering? We are offering offline, online classes, right? We are offering study material, test series, foundation batch. So these are our programs. इतना हैंग क्यों हो रहा है? Why it is hanging? Okay, yes, this is courses and admission. हाँ, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम या कुछ है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। आप यहाँ पे जा सकते हो, कोर्सेज एंड एडमिशन में यू विल फाइंड मैनेजमेंट ऑप्शनल कोर्स, फ्रॉम देयर यू कैन एनरोल. Classes are available online, offline, and one thing we will guarantee, once you join our program, see, let me make it a very simple statement.
there is no other faculty for management option other than me. And this is not an arrogance. People are not capable, they are not capable enough to teach for management. They are GRF faculties or some here and there. They are positioning themselves as UPSC faculty. So be cautious, okay. And one more thing we want to guarantee: if you join Lukmaan IAS, we will give you the very, very quality education, and we will assure you, like other aspirant, you also score 300 plus in management, and you get value for your time, the precious time which you are investing in this exam. Right? This is what I have to say. Thank you very much.